3, and I'm going to introduce you the SQL injection part of it. So IP address है जो हमारा टारगेट आज की है वो 113 है, ठीक है। आप अगर देखो यहाँ पे, so over here the most important part you can see they have given first of all let's do a small nmap backend में because we're going to do some information gathering also. So nmap open a small c, it was capital C, sorry. So हमारे पास वेबसाइट है यहाँ पे लिगॉट सिक्योरिटी के नाम पे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना है कि उसके वेब पेज में क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली अंडरस्टैंड करना है कि वेब पेज है क्या। तो जैसे कि मैं अगर यहाँ पे देखूँ गॉट सिक्योरिटी, वी हैव रैम्पर्ड अवर वेबसाइट फॉर न्यू रिलीज ऑफ CMS गैलरी CMS। अब यहाँ पे बात हो रही है CMS की बात। तो CMS एक्चुअली होता क्या है पहले वो हम देखते हैं। CMS स्टैंड फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आपके वेब एप्लीकेशन और क्रिएशन के लिए काम आता है। जैसे आप देखो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर used to manage the creations and modification of digital content. CMS are typically used in enterprise content management and web content management. जैसे कि अगर आप CMS की बात करो तो यहाँ पे वर्डप्रेस है, Drupal है, आपका जुमला है, Magento है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे आपके CMS है जो आपके यूज होते हैं। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इसको फिगर आउट करना है कि ये कैसे काम कैसे करता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो आपके वर्डप्रेस Drupal की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। जैसे कि अगर आप Ec-councial की वेबसाइट ले लो, तो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो CMS यूज हो रहा है, यहाँ पे वर्डप्रेस यूज हो रहा है। और जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे एक गैलरी CMS इम्प्लीमेंटेड हुई है आपके उस वेब सर्वर में। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि यू हैव टू फिगर आउट व्हाट आर द थिंग्स आर रनिंग ओवर देयर। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो, वी आर फुल आवरसेल्फ, वी हैव पुट ऑन दिस डेव सर्वर। अब ये जो डेव सर्वर है, अब ये डेव सर्वर का मतलब क्या हो सकता है? डेव सर्वर का मतलब होता है डेवलपमेंट, अंडर प्रोसेस, अंडर वर्क। सो ओवर हियर दे हैव गिवन ब्लॉक, और इन्होंने अपना एक गैलरी सिस्टम इन्फॉर्म किया है, जो कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करो तो आप वहाँ पे रिडायरेक्ट कर दोगे। दिस इज अ प्रॉपर गैलरी CMS जो वो बोल रहे थे कि हमने इम्प्लीमेंट किया। यहाँ पे ब्लॉग भी दे रखा है। ब्लॉग में क्या दे रखा है? न्यू गैलरी ऑनलाइन ऑन August 5th of 2010. We just implemented our new state-of-art gallery, so we are putting on our production server hosting on Find Your Notebook Anywhere Cloud. This gallery application can be available for purchase soon in the introductory price. If you want to the source code, you can price it $900, or you can simply check the Kioptrix.com with the gallery. क्योंकि यहाँ पे URL दे रखा है इसका। Kioptrix.com ये आपका डोमेन नेम, और गैलरी यहाँ पे जो अंडर है वो आपकी GLP वर्जन 2 है। और क्या इन्फॉर्मेशन निकल के देखते हैं। न्यू लीड प्रोग्रामर, ओके, वी जस्ट हायर्ड अ ग्रेट न्यू लीड टू आवर प्रोजेक्ट। He is 13 years old and fresh to college. Beside being two hackers, he is a wizard of the upcoming coding. Welcome, Lone Farrett. And forget to fill your timesheet. It means there is a new lead programmer, a new user, we can say. Company employer information gathering. और अगर मैं थोड़ा सा लॉगिन के पास आऊँ, तो मैं लॉगिन में देख सकता हूँ कि यहाँ पे आपका एक लॉगिन फॉर्म है जिसमें आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड दिख रहा है। और यहाँ पे एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो आपका है पावर्ड बाय लोटस CMS। यहाँ पे जो CMS चल रहा था,
So this CMS is also works for the open source Lotus CMS. You will find for free updates, sending and receiving emails and upload files. You see lots of things. बट अगर मैं यहाँ पे नीचे देखूँ, यहाँ पे उसकी vulnerabilities आ रही है जो कि है आपकी rapid7.com से और exploitdb.com से. Remote code execution attack. This module exploit a vulnerability found in Lotus CMS 3.0 router function. This is done by embedding PHP code in a page parameter which will be passed to for event call. Therefore, allowing remote code executions, this module can either automatically pick a page parameter with the default page. और अगर इसकी पैरामीटर की बात करें, जो ये बात कर रही है आपकी LCMS सर्च पार्ट की बात कर रही है, जहाँ पे पूरा का पूरा पाथ है आपके सर्वर का, जहाँ पे अटैक पॉसिबल है. और अगर आप यहाँ पे देखो, this is a proper exploit, PHP execution attack. So there are various things can be done. There are various processes that can be provided to find and figure out the loopholes. तो अगर आप यहाँ पे और भी देखो, it's an exploit given. और अगर आप exploit DB में जाके देखो, यहाँ पे भी local file inclusion दे रखा है. So the most important part is to understand the application first. Then you can simply go for the attacking phase. I will say that one. So, Nmap port 22 was open there, and port 80 was open there. The PHP version is 5.2.4. So what we can do, we can try to check one by one, or we can try SQL injection part. Single quote or 1 is equal to 1 minus minus space. So we have some error. We have an error, incorrect username and password. Let's see if we can find some error or explanation or not. No error over there. See, normal there is a port 80 and 22 was open there. In the URL parameter, you can see system admin is equal to page admin. Submit. Or we can simply try to check the CMS. You can see. For this case, what I'm going to do, I'm going to look for vulnerabilities over here. So let's check. There's an image file. This is normal parameter php.php.5. Last file upload, same .php.5. Log.press room. See, over here, when I simply get to there, I can see an option, a category function, which is sorting option. Photo ID, file name, file size, data uploads, and view files. So what we can do, we can try to check one by one all the things. Let's try with this one. File name, file size, upload data. But there is one common thing if you check the parameter value. Compare this one with the statement of SQL injection part. This Kioptrix.com, let's paste it over here. So we're going to try SQL injection, if we can find SQL injection or not on the database side. So I'm going to write domain name, file type, dot programming language, question mark, parameter with the value.
So the domain name is your Kioptrix. The file type over here is your gallery. This is a directory, and this is a file type. And the file type, they will add some programming language also, which is your PHP. And the ID over here is the parameter value, and one is the value over here. So if you try SQL injection to identify the loopholes, what we do, we try to put a single code over there to check the error handling, which is the first stage. And over here, I can see you have an error in your SQL syntax. Check that minus corresponding to your MySQL server version for the right syntax to use near. See this one. Let's try backslash. Same error. Let's try double quote. Same. Let's try single quote bracket. Same error. Let's try double quote bracket. I tried all the combinations to figure out the one it is vulnerable or not, but the server is vulnerable to SQL injection. So if you find some server is vulnerable to SQL injection, what you can do, you can simply use your order by clause minus plus. Let's try to figure out the number of loopholes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5. So through order by clause, I can identify how many numbers of columns are present on the server side. So there are total 6 columns, unknown column 7. Order by function is basically used to identify the number of columns are present on the server in the sequencing manner. If you use 2, then 1, then 6, then 7, it will not be provided. Because in order by function, you have to give a proper clause जो आपके use होंगे. तो अगर आप यहाँ पे देखो, either you can go for the exploit, which is your public exploit, or you can simply find with the manual approach. Let's remove 6 or 7 or 8. No error. But जब मैं इसमें 7 डालता हूँ, I can see there is an error. So in this scenario, the most important part is to find out each and everything. For example, what I'm going to use union all select statement. Plus negative the first one because it's executing both the things. So यहाँ पे क्या दिख रहा है? There are highlighting the parameter from the server side is 2. 2 is reflected back. So over here, the most important part I'm going to do is write the version command. I can run the commands over here. Let's write database. The database name is gallery over here. If we try the manual approach, it will take a lot of time. So over here, I can see that if we find some vulnerabilities on the server side, to मैं क्या करूँगा? I'm going to just copy the parameter, and I know that the database is gallery. So for that case, we can use SQL map -u, the URL that is infected, and the -d, the database was gallery. So I guess you all are familiar with the SQL map. Yes, you know, guys. Yes, sir. Thank you. जिसने भी बोला thank you. बाकी सारे मतलब मौन बट पे बैठे हैं. I like it. So over here, we're gonna use some SQL map commands. There's one thing which I will say: if you are not present on the class, so it's all up to you guys. Thank you.
So -D stands for specific database. So I'm going to use the gallery database. In the database, there should be some tables. So I'm going to use -tables to enumerate. -tables. You can see that we have some accounts given by there. We have a proper thing. So in this scenario, the most important thing that we're going to learn is how we can simply proceed with that. There are many other ways that we can use the SQL injection part. The automation part is important. The automation thing is important over here. So in the database queries, I can see in the first stage that it's showing that there is a server, there are some tables over here. So tables कौन-कौन से यहाँ पे dev account है, gallery comments है, galleries हैं, आपकी photos हैं, settings हैं, आपकी gallery users भी दे रखे हैं. So as a pen tester, what I'm going to look? I'm going to look for each and every tables until I find some relevant data on the server side. तो यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले दिख रहा है dev account, device account. As per the data they have discussed, it's a dev server. So सबसे ज़्यादा important चीज़ क्या है? यहाँ पे figure out करना the loopholes को. तो मैं यहाँ पे capital T यूज करूँगा. क्यों? Because मैं यहाँ पे dev account को यूज करूँगा. -dev accounts. तो इसके अंदर क्या होंगी? columns को extract करेंगे. Let's extract some column names. So we can see there is an ID, there are some passwords, there are some usernames. But the most important part, understand the queries they are using. ID select case when they have given true statement, which is your Boolean blind explanation. They have an error-based explanation also. So over here, what I'm going to do, I'm going to use a capital C. Why? Because I'm going to specify the claims. Password. But over here, I'm going to use one more command, which is called your dump command. और dump command से क्या होगा कि जो भी आपकी queries होंगी specific parameter पे, जैसे कि आपका यहाँ पे ID यहाँ पे username and password, तो इसमें data को fetch करने के लिए हम use करेंगे. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? I'm going to use -dump. Do you want to store the hashes on server side? I will say no. Do you want to use the crack them dictionary tags? So यहाँ पे देखो उनको दो मिले हैं users. Drag, lonefer it. So what are you gonna do? You're gonna use the dictionary attack over there. So I'm gonna use yes. Why? And you can see the username drag, the password, which is encrypted now. These are the users are present on server side, which is your drag user and lonefer user. And this is the encryption standard. So SQL injection or SQL map, you can use the manual approach or you can use the automation approach. The manual approach जो आप use करोगे, you have to figure out all the loopholes. अगर आप ये हटा भी दो, it will work.
इफ यू फाइंड द डेटाबेसेस फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टेबल का नाम लिख सकते हो और टेबल डेटा कहाँ से फेच करेगा, फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल्स आर्किटेक्चर। वेयर टेबल अंडरस्कोर स्कीमा इज इक्वल टू आपका जो डेटाबेस था, और डेटाबेस का नाम क्या था, कैलवी। स्कीमा एम, डेव अकाउंट, गैलरी का अकाउंट, गैलरी सी। So all you need to specify the manual approach or the automation approach. It's all up to you guys. Most of the pen tester, if they find the loophole on the server side, they try the automation part to attack on the server side. And there are various things that can be performed. So when we have the usernames of the users, what we can do, an attacker simply try to gain access on the server side. This machine is running in the local server, so that it will be easy for us. So what are we going to do? We're going to do SSH drag the user and the IP address. So drag user as an IP, the password is master. Or you can simply copy this hash to check. You can use hash hyphen identifier check करने के लिए आपके use hash format MD5 देखो. You can use online website also to crack those passwords. Hash killer. You can use hash killer to decrypt the password easily. And there are many other ways that can be used. For example, अगर आप यहाँ पे देखो, SQL map can also use to decrypt the password. अगर वो word वहाँ पे हुआ तो. So let's use master first of all. Yes, so we are on the server side. So Ubuntu welcomes you, absolutely no warranty. Okay, no to access official Ubuntu documentation. But the important thing is how we can simply get to the server, because हमारे पास सबसे पहले वेब सर्वर होता है, वेबसाइट होती है. वेबसाइट के अंदर loopholes find out करना, that is the first important priority. And after that you can look for other things one by one. So यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा important चीज़ है आइडेंटिफाई करना कि यूजर जो ड्रैग है, जैसे कि मैं देखता हूँ कि PWD कहाँ पे हूँ मैं. अच्छा, मैं यूजर ड्रैग के सर्वर में हूँ. तो यहाँ पे आपकी आर हिस्ट्री दे रखी है क्योंकि यूजर ड्रैग किया. चलो देखते हैं ओपन करके. तो इसने लास्ट में क्या चलाया था, LS चलाया था, CD चलाया था, कैट चलाया था और SU लूनिफेरेट चलाया था.
बैश हिस्ट्री जहाँ पे आपकी सारी सारी कमांड्स आप स्टोर करते हो, की स्ट्रोक्स की बात होती है। चलो थोड़ा restricted, क्यों? बिकॉज मैं यहाँ पे आर बैश हूँ, I don't have the permission to explore the server. Let's use cat etc password to check the number of users. Loneferret has bin bash, which has the permission to explore on the server side. And the user drag has rbash. Rbash stands for restriction bash, is don't have the permission over there. MySQL server, SSH server, key logs, system logs, you can see all the things are over here. And these are the local users. But we can see that there is a Lonefired which has bin bash. It means he can explore all entire server. So what I'm going to do, I'm going to copy his username and I'm going to use su. su होता है आपका switch user. Password था Star Wars. Check करते हैं. Cool. So we are Lonefied now. Export term is equal to external. So मैं जहाँ पे हूँ अभी वो है यूजर लोनेफेरेट की डायरेक्टरी pwd present working directory. So let's try to move to the Payatu and Godfrey. So over here जो मैं आपको आज vulnerability इंट्रोड्यूस कराऊंगा इसमें वो है आपका executable नहीं exploiting pseudo right users यहाँ पे देखिए. तो सूडो यूजर्स होते क्या? सूडो यूजर्स आपके सुपर आपके रूट यूजर्स होते हैं जिनको फुल एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशंस होती हैं. ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं जब मैंने यहाँ पे कैट ईटीसी पासवर्ड किया था सूडो यूजर्स को आपको एग्जामिन करने के लिए उनकी आरआईडी यानी कि उनकी रिलेटिव आइडेंटिफिकेशन 100,000 होगी. हर एक सुपर यूजर का जो आरआईडी होता है वो 1000 होता है, यानी कि उसके पास रूट की परमिशन होती है. और यहाँ पे रूट की परमिशन किसके पास है? यहाँ पे रूट की परमिशन लोनेफेरेट के पास है. तो अटैक को थोड़ा समझते हैं कि अटैक है क्या. If the attacker can't directly get any root access by any other techniques, he might try to compromise any of the users who have pseudo access. Super user access. Once he has access to any of the pseudo users, he can basically execute any command with the root privileges. Administrator might just follow the users to run a few commands through sudo and all of them, but even configuration. They might introduce vulnerabilities annoyingly, which may lead to privilege escalation path. A classic example of this is assigning sudo users to find commands so that another user can search for particular files and logs in the system, while the admin might unaware that the find command contains parameter for command execution also.
An attacker can execute command with root privileges. जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो sudo -l print the command which have allowed to run sudo guys. ये देखो sudo -l, इसमें अगर आप ये देखो कि बिना रूट परमिशन से ये बिन एसयू कर सकता है, और यहाँ पे एक और चीज़ है यूजर लोकल बिन ht. So we know that the user notified is a super user, but यहाँ पे जो ht है क्या? ओके, ht नॉर्मल एक फाइल है, यहाँ पे दिख रहा है, बट ये क्या फाइल है मुझे देखना पड़ेगा. For that thing, what I'm gonna do, जब अगर आप यहाँ पे देखो लोनिफाइड के यहाँ पे पॉलिसी देखिए, कंपनी पॉलिसी. Hello new employee, this is a company policy here to you to maybe install software for editing, creating and viewing files. Please use the command sudo ht. Failure to do this will be immediate termination. So we have some configurations, we have some applications जो हमें यहाँ पे एग्जामिन करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे जो sudo ht जो यहाँ पे है, ये कंपनी की एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है कंपनी का, और ये कंपनी का सॉफ्टवेयर किसमें चल रहा है, ये यूज होता है आपके एडिटिंग के लिए, क्रिएटिंग के लिए और व्यू फाइलिंग के लिए. और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपली इन्होंने दे रखा था फाइल, ये यूजर बिन के विद रूट परमिशन चल रही है, यानी कि एप्लीकेशन रूट से चल रही है. और अगर आप यहाँ पे भी देखो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. तो अगर मैं यहाँ पे sudo ht करता हूँ, sudo ht, सो sudo ht में मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिंपल फाइल, एडिट, विंडोज और हेल्प, और ऐप नेम क्या है यहाँ पे ht दे रखा है. कॉन्फ़िगरेशन फाइल मेरी होम लोनिफाइड की डायरेक्टरी में, और ht.fetch फाइल है वो. सो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे फाइल दे रखी है, एडिट दे रखी है, विंडोज दे रखी है. एडिट में क्या देखा है, कट और डिलीट और कॉपी और पेस्ट और शो, कॉपी फ्रॉम, पेस्ट इन. डब्ल्यू में क्या देखा है, साइज, मूव, क्लोज, लिस्ट, हेल्प, अबाउट ht, the permission is gpl. तो यहाँ पे दे रखा है फाइल को एडिट करने के लिए, फाइल एडिट करने के लिए. तो मैं यहाँ पे कुछ फाइल ओपन करके देखता हूँ अगर होता है कि नहीं. तो यहाँ पे देखते हैं कि रूट डायरेक्टरी जा सकते हैं हम. यस, यहाँ से रूट डायरेक्टरी जा सकते हैं, बिकॉज ये एप्लीकेशन sudo यूजर से चल रही है. जो एप्लीकेशन sudo यूजर से चल रही है और वो उस एप्लीकेशन को एक लोकल यूजर एक्सेस कर सकता है, तो उसके पास पूरी राइट्स होते हैं. तो अगर मैं बात करूँ वर्नेबल एप्लीकेशंस की, वर्नेबल फोल्डर्स की हमारे लोकल ड्राइवर में, जैसे सबसे पहला जो है हमारा, वो होता है हमारा etc sudo और फाइल्स. etc sudo और फाइल्स क्यों होती है, बिकॉज etc sudo और फाइल्स में हर एक यूजर्स की एक स्पेसिफिक परमिशन दी जाती है, एक स्पेसिफिक एजेंडा होता है उसमें, जो वो यूज कर सकता है अलग अलग परमिशंस के लिए. जैसे कि यहाँ पे देखो, एक यूजर प्रिविलेज स्पेसिफिकेशन, रूट के पास ऑल फंक्शंस है. तो मैं क्या इस एप्लीकेशन के थ्रू उसके पास जा सकता हूँ, देखते हैं कि etc sudo फाइल्स में जा सकते हैं. ओके, फाइल एरर कर दिया. etc sudo और फाइल्स, yes we can simply access the sudo files on the server side. और अगर आप यहाँ पे देखो
ये था रूट की ऑल परमिशन है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली स्पेसिफाई कर सकता हूँ अपने किसी भी यूजर को परमिशन देने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे बिन एसेस दे रखा था पहले। बिन एसेस जो होता है आपका, वो सिंपल सिस्टम बाइनरी से कॉल करता है, यानी कि रूट यूजर से कॉल करता है। तो अगर आप यहाँ पे सिंगल कोड बिन एसेस कर देते हैं, बिन एसेस मैंने लास्ट टाइम स्टूडेंट्स को करने के दिखाया था। बिन एसेस अगर आप किसी को देते हो तो वो सिस्टम कॉल्स के लिए यूज करता है, जिससे एक डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। ये नॉर्मल। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे बिन एसेस पहले से दे रखा था। बिन एसेस का मतलब क्या होता है कि वो सिस्टम कॉल को कर सकता है। अगर मैं सिंपली यहाँ पे sudo bin एसेस कर दूं, so I am on the root right now. Who am I? I am root. So यहाँ पे जो ये दे रखा था sudo executable users, so इसमें एक नॉर्मल परमिशन चेक करता है कि उस यूजर को कौन कौन सी स्पेसिफिक परमिशन यूज है बिना रूट यूजर। We can run find cat and python. See over here, find cat and python command. These all command can be run as root without the sudo. If we can somehow escape the shell through any of this command, we can get the root access. और जो बता रहे थे जो फाइंड कमांड है वो आपकी कमांड एग्जीक्यूशन भी करता है कभी कभी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अंडरस्टैंड करना है कि एक आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। Never give sudo right to any of the programming languages, compiler or interpreter or editor. This technique can also be applied to VI, More, Leads, Perl, Ruby, GDB or others. Sudo Python command spawn shell. सीधा एक system bin bash. Countermeasure सबसे ज़्यादा important. Do not give sudo right user any program which leads to escape shell. Do not never give sudo rights to VI, More, Less, Nmap, Perl, Ruby. There's a lots of things. So in this machine, this was all about system animation and system that can be used in various types. So the machine, Kioptrix जो machine थी आपकी यहाँ पे, वो starting की अगर मैं बात करूँ, ये it's all about the manual testing, और अभी तक हम manually कर रहे हैं. We will not use any of the automation tools.